अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है गोस्ट राइटिंग से कि गोस्ट राइटिंग दिन ब दिन पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है फ्रीलांसिंग में, कि सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क से निकलते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ गोस्ट राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। बट उन गोस्ट राइटर्स की वजह से क्या हमारा लिटरेचर बढ़ रहा है या इतना कमर्शलाइज्ड हो गया कि आर्ट रही नहीं उसमें। तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे दो गोस्ट राइटर्स के साथ। एक का नाम खिरमिज़ हयात है और एक का नाम मोहम्मद मूसानी है। तो सॉरी, एक का नाम खिरमिज़ हयात है और एक का नाम मोहिद मूसानी है। तो खिरमिज़, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, my name is Khirmiz. I've been serving as a ghostwriter I think for last 3 or 4 years. Uh, but my writing journey has been very interesting. So that's all about me. I'm just a common person who loves to write. मोहिद। Okay, so for me, my writing journey began quite early with my childhood, but at that time I didn't know that I was exceptionally or maybe just a bit above average in writing creative stuff. But by the time when I got to college and all, and I shared my fiction stories and short fiction, so that is when I realized that I had a gift with words, and that is basically how my writing career started. And it's been around a decade interacting with writers, doing writing and all sorts of things. Sometimes uh, you write for yourself and you don't want to share it with anyone else. So I would say writing is an art form. That's the point. So no matter how much you commercialize it, the art is going to be there. So one day or the other, the most talented writer or anyone who's doing something without his own name, if he is talented enough, he might do 10 ghost books, but after that he can bring on the funds and publish under his own name. So that's what I believe, that ghostwriting is actually a good opportunity to make mistakes, to write things that might not fit in well, to craft yourself better. And then when you're at a good point where people really consider you as a good writer, you consider yourself as a good writer, then go on and publish with your own name, I believe. Yeah, that's too good. So Khirmiz, what is the importance of writing in your eyes? The importance of writing is that it is something which makes you express yourself. Without writing, I don't think कोई बंदा ऐसा है on this earth who can express themselves without any form of art, not just writing. You can act, you can paint. This freedom of expression is what encouraged me to write, and it holds a significance in my life. I don't think there is anything else that holds such kind of significance that writing does. तो राइटिंग की वजह से, क्योंकि अब राइटर्स, पहले ये था हमारे पास पास्ट में सिर्फ कुछ लोग राइटर्स होते थे और जो होते थे वो बहुत ज़्यादा लर्निड माने जाते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट हासिल थी। लेकिन अब तो हर कोई राइटर है। कोई इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल रहा होता है, कोई इंस्टाग्राम पे अपनी पोएम्स डाल रहा है, कोई मैगजीन्स में लिख रहा है, कोई फेसबुक पे डाल रहा है। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं। तो अब क्योंकि गोस्ट राइटिंग की वजह से, फ्रीलांसर की वजह से भी बहुत ज़्यादा गोस्ट राइटर्स आ गए हैं, राइटर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो क्या राइटिंग वाकई अब भी उतनी स्पेशल फील्ड रही है जैसे पहले थी, या उसकी वो स्पेशलिटी वाली चीज़ कम होती जा रही है? So should I? Yeah. Okay. The thing is, first of all, you should know what you're interested in. आप as a reader, आपको कौन सी चीज़ attract कर रही है? It's not like I'm a writer. अगर मैं जाकर politics की book उठाऊँगा, it wouldn't interest me. It wouldn't grab my attention. I'm interested more in people expressing themselves. चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो for that matter, चाहे वो कोई राइटिंग ब्लॉग हो या फिर कोई बुक हो. I would see who I am an audience to. तो उसकी तरफ मैं जाऊँगा. I don't think that writing is losing its value. I think it's a good thing कि आजकल बहुत ज़्यादा राइटर्स आ गए हैं. The youth has their voice now. पहले उनके पास वो वॉइस नहीं थी, वो एक्सपोजर नहीं था. देयर वाज दिस सर्टेन क्लास जो लिखती थी एंड देन सब उसी को फॉलो करते जा रहे थे. आई डोंट थिंक देयर इज़ एन ओल्ड राइटर जिससे एक यूथ एसोसिएट कर सकता हो, जिससे रिलेट कर सकता हो.
सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आई डोंट थिंक कि वैल्यू होती जा रही है, बट दैट्स अनदर थिंग कि राइटर अपनी वैल्यू होता जा रहा है. राइटर को एज अ गोस्ट राइटर अपनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन राइटिंग इटसेल्फ. ओके, इसी को हम लेके मोहित के पास चलते हैं, क्योंकि मोहित आपने इस पे भी पहले काम की बात की थी कि गोस्ट राइटिंग इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू अर्न मनी, और वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन गोस्ट राइटिंग में आपके पास होते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपको उस Right. क्लाइंट की आवाज़ बनना होता है, उसकी आवाज़ को Exactly. एडॉप्ट करके लिखना होता है. तो अगर आप Exactly. उसकी आवाज़ को एडॉप्ट करके लिखते हो तो वेयर इज़ योर वॉइस? The thing is, the most painful thing for a writer is to not have his or her name, under the work he's done. But you have to give that sacrifice. And what was your question again? क्वेश्चन मेरा ये था कि गोस्ट राइटिंग में क्या होता है, आपके पास एक राइटर है, उसके पास एक क्लाइंट आता है, Right. वो क्लाइंट की आवाज़ को अपना के लिखता है, उसकी अपनी जो वॉइस होती है वो नहीं होती, इट इज़ द क्लाइंट्स वॉइस. Yeah. तो इस तरीके से क्लाइंट की वॉइस कवर हो रही है, एक राइटर की वॉइस कवर नहीं हो रही. तो Yeah, it's like telling somebody to paint a picture of an elephant, but how he or she will, actually put it out, you don't know. So the client will, of course, give you outlines or a storyline, but what you're gonna do with it, how you're gonna take it, that's all up to you. So that's what I'd like to say about it. ओके. अब गोस्ट राइटिंग की वजह से जब, क्योंकि दुनिया में है 8,000 ज़बानें, Right. लेकिन गोस्ट राइटिंग ने जो सही मायने में फ़रोग दिया है वो दिया है इंग्लिश को. इंग्लिश बेतहाशा बढ़ गई है थैंक्स टू अमेज़ॉन, किंडल, इन सब की वजह से ई बुक्स का ट्रेंड बहुत आ गया. अब हर कंपनी यही करी है कि जब भी उनको लॉन्च होना होता है, उनको अपने आप को बढ़ाना होता है, तो वो ई बुक निकालती हैं. उसकी वजह से इंग्लिश तो बहुत बढ़ गई है और हर कोने में आ गई है. बट क्या हम यही चीज़ उर्दू में अपना सकते हैं? आई थिंक साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आप कभी मार्केट में अपने आप को जाते हुए देखेंगे एंड देन यू विल सी अ प्रोडक्ट व्हिच इज ब्रांडेड, जो बाहर का प्रोडक्ट है, एंड देन यू हैव दिस लोकल प्रोडक्ट. सो इंग्लिश इज लाइक दैट ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसके पीछे हर कोई फॉलो करता जा रहा है. अगर कोई बंदा उर्दू बोलेगा या अगर कोई बंदा इंग्लिश बोलेगा, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इट वुड बी अवर साइकोलॉजी कि हमें इंग्लिश बोलने वाला बंदा ज़्यादा एजुकेटेड लगेगा, ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा. इट्स इन आवर साइकोलॉजी. जब तक हम इस चीज़ को पहचानेंगे नहीं, अपनी साइकोलॉजी को करेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी जजमेंट बंद नहीं करेंगे, तब तक उर्दू का कुछ आई डोंट थिंक हो सकता है. सो आई थिंक इंग्लिश आ रही है, लेकिन उर्दू भी इसी तरीके से आ सकती है इफ़ वी चेंज आवर साइकोलॉजी. सो दैट्स इट. मोहित, इसी को मैं आगे लेके आपके पास चलूँगी. जैसे इन्होंने बात की और बहुत सही बात की कि हमारी साइकोलॉजी ये कि हम इंग्लिश वाले को एजुकेटेड समझते हैं, उर्दू वाले को नहीं समझते. Exactly. तो क्या हम इसका गोस्ट राइटिंग का ट्रेंड ला कर उर्दू में क्या साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं? The thing is that English has become a global language, right? So for us to reach a larger audience, we must adapt to English. But at the same time, like we were discussing earlier, we have around 20 crore people in Pakistan, and Hindi is a very similar language. That makes around 1.2 billion people who can consume content which is in Urdu. So there is a lot of area where we can develop platforms that encourage Urdu / Hindi content, and I believe both of these languages are very beautiful. So yeah. ओके, तो यानी हम गोस्ट राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, राइट? Of course we can, but not necessarily through ghostwriting. The thing is that we as this generation have stopped taking pride in our own language. जो इकबाल लिख गए, जो पतरस बोल गए, जो मीर दर्द लिख गए, it's there. We don't really hear about new Urdu writers. There are very, very few writers that have made the mark in the industry. So it's tough for people who do literature in Urdu, especially in this age. But again, there's a vast audience for Urdu content. So yeah.
उर्दू के लिए एक हद तक हमारे पास ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है किरमिज़, लेकिन इसको करेंगे किस तरीके से स्टार्ट, या अगर हम इसमें जाते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे हमारे पास? सबसे पहले चैलेंज ये है कि लोगों की साइकोलॉजी को टैप इन करना। जस्ट लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, पहले हमें उस मार्केट को रीड करना पड़ता है, हमें उन सब ऑडियंस को गैदर करना पड़ेगा, पहले मार्केट देख के कि कितनी ऑडियंस उर्दू की तरफ अट्रैक्ट होती है, एंड देन फिर हमें उन लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा जो उर्दू की तरफ इतनी ईजिली अट्रैक्ट नहीं हो सकते। एंड दैट इंक्लूड टू डिफरेंट सोसाइटीज़। एक वो हायर सोसाइटी है जो आर्ट्स काउंसिल में जाके मुशायरे देखती है, एंड देन देयर इज़ एन ऑडियंस जो अपने घर में उर्दू इंटरटेनमेंट देख के अपने आप को एंटरटेन करती है। सो यू कैन टैप इन टू बोथ ऑफ दीज मार्केट्स। फॉर दैट यू हैव टू हैव योर ब्रांड इक्विटी। आप अपने ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने उर्दू को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे दैट यू जस्ट डाइल्यूट द इंग्लिश मार्केट। आप अपने एक लोकल मार्केट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि इंग्लिश मार्केट खुद ही थोड़ी सी वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी, एंड जब उसकी डाइल्यूशन शुरू होगी तब लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। आई वुड लाइक टू सी दिस वन थिंग कि यहाँ पे मैंने इतने लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है। इतना सिडनी में एक छोटा सा सबर्ब है लेकैम्बा, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, एंड देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियंस, दे स्ट्राइव टू लर्न उर्दू। नाउ द साइकोलॉजिस्ट से they speak in English but they are attracted towards Urdu, Hindi, Arabic, everything. It's all about psychology. आप उनकी psychology में टैप कर लो, and then चाहे उर्दू हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, you can just go with it. You can just make your product into a success. आपका कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है as long it has something to offer to the audience. यानी साइकोलॉजी इज मस्ट। Psychology is must to tap into the brain of someone who is watching you, who is listening to you. साइकोलॉजी में कैसे टैप कर सकते? Locally or internationally? लोकली। Well, first we have to become proud of our language, right? So anyone, I think, reading something in Urdu would, of course, we have our prejudice that they are not that educated, or they are not, as cool as the other people. But we as a nation must promote our own language. Even though we've been, me and Idris have been writing in English, but we do accept the fact that there's a lot of content that we can make in our own language, which is Urdu. So we need platforms, we need to think out of the box, and also we need to make people understand that this is something that truly belongs to our nation. So this is our heritage, this is our culture, and I think any society that has swayed away from their culture has diminished. They've not been able to keep themselves together. उर्दू में गोस्ट राइटिंग लाना अभी तो मुमकिन नहीं लगता, आपको एक डेकेड का काम लगेगा। लेकिन उर्दू की प्रमोशन में हम एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं जो अभी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, वो ये कि एंथोलॉजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में निकालें। जैसे इंग्लिश में अब एंथोलॉजीज़ का ट्रेंड वापस से बढ़ता जा रहा है, लोग आते हैं अपनी पोएम्स बेचते हैं, एक पब्लिशिंग हाउस उन सबको कंपाइल करता है, एक ई बुक छोटी सी बनाता है और अमेज़ॉन पे, किंडल पे, बार्न्स एंड नोबल्स इन सब पे डाल देता है, और उसकी थोड़ी सी भी सेल्स होती है तो कंपनी को भी फ़ायदा होता है और उन राइटर्स को भी फ़ायदा होता है। तो क्या ये चीज़ उर्दू में लाई जा सकती है? I think there is this one untapped market जो है, there are people, older people who want to write their book in Urdu. उनके पास resources होते हैं उर्दू में टाइप करने के, but unfortunately they have determined arthritis. They can't write anymore. So that's how a person is speaking good Urdu, or as a profound knowledge of how to write and compose, all those things which the writer is saying, वो हम locally कर सकते हैं. There are a lot of older writers who can't write anymore, but they can speak. इससे आप उनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे हो, and then you are earning something. Because until and unless you aren't earning something, you are not making something out of yourself, you cannot encourage others. जब तक आप खुद पावरफुल नहीं हो, आप किसी और को पावरफुल कैसे बना सकते हो? Until and unless you have the resources, then you can provide them. आप खाली हाथ से किसी के पास जाके किसी को कुछ दे नहीं सकते हो until and unless you have something. So that's the thing. Yeah, true. तो अब इसमें यूथ क्या काम कर सकती है मोहित? As youth, we have to really
be proud of our culture, right? We have to get out of that Urdu and English and privileged and underprivileged concept. If someone is speaking Urdu, just like we mentioned, we just assume that you're not as smart, as educated, or as experienced as us, but they are. So we first need to build upon an attraction for Urdu, and that can be done through a lot of ways. We can have a lot of conventions where Urdu writers come up and stuff like that, because we don't really get to hear names of writers, Urdu writers, like let's say we have Manto, and I'll ask you to name 3 or 4 Urdu writers, and I guess you wouldn't know. So that is a problem that is within us. We don't want to accept our own culture. We want to westernize ourselves, while the West wants to diversify itself. So I'll say that first we have to become proud of our own language. ओके, तो कमिंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, आप खिरमिज़ क्या रिमार्क्स देना चाहेंगे और आखिर में क्या कहना चाहेंगे अबाउट द होल सेशन, अबाउट द होल टॉपिक? It's a great initiative from Writer Talks. I think they are giving the platform of people to talk, for their voices to be heard. Otherwise, who would listen to you? Who would sit around and take some time out to listen to you? आपको क्या कहना है? I think this is something great. This is a great initiative, and whatever we are speaking about, it may have an effect on someone. If this effect is on a small audience, then it is good. If it is reaching to a wider audience, then also it is good. But our voices are being heard. This is a significant thing. Mohid? Yeah, I mean, just by doing this, somehow we are contributing to what we aim for, and writing is actually really healthy for your mind as well, because there's a Stanford study that was conducted around a decade ago, and they say that on average you think 60,000 thoughts per day, and the best part is 90% of those thoughts are repetitive. So you're only getting a surplus of 10% every day, whereas you get when you write down things, all those loops of thoughts and chains of thoughts, they get on a paper, and then you can somehow solve those issues. But when all those thoughts are looping around your mind, you go astray, and that is the reason why our thoughts are repetitive. So whether you're in trouble, whether you're depressed, or whether you're just okay, I think it is a very good idea to write about your day when at least before going to bed. And this is one more thing, that after, let's say, a week or a month or 2 months, you'll start to recognize who you really are. What pattern do you follow? What's your behavior? And then you can, change yourself for the better. So I think it is very important to write, regardless of what situation you are in. तो इन कंक्लूजन वी कैन से कि नो डाउट गोस्ट राइटिंग ने बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है राइटिंग को, बट इट्स गुड। और अगर इसी चीज़ को हम उर्दू में अपनाएं तो इस बहाने हम उर्दू को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हाफिज़।